Where did you start off once post college? What did you kick off first? Like? पोस्ट कॉलेज के अंदर सो आई वन अ ट्रिप टू न्यूयॉर्क to tour some advertising agencies, the best in New York and subsequently the world. तो ये idea था. But I went. You worked with Ogilvy या? नहीं मैं Ogilvy भी गया था. But they had no openings for international students, right? A couple of other places did. I applied, almost got in, but at the day of the interview, I got high. Damn. Yeah, no, but not like that. In the sense कि मैंने थोड़ा बहुत I didn't research as much as I could. And phone interview था basically छांटने के लिए कि candidate है या नहीं है. And I just talked to that bitch, and she was like a fucking Gujarati bitch, you know, but like she was like born in the USA and stuff. And she put her gender pronouns and stuff in the fucking email. And I'm like, and मैंने उनके ads देखे, liked it, but I remember मेरे को ऐसा लगा कि जिस तरह का मैं बंदा हूँ ना, जिस तरह मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ, like I don't want to be a New York copywriter and stuff, you know, like मैं वहाँ जाके ads बना रहा हूँ. Not the right channel for you. मतलब for expressing yourself. Despite the fact कि मेरी, you know, like मैंने degree करी advertising के अंदर, it just didn't feel right, and you know, luckily they didn't accept me. तो I just did a bunch of odd things after college, जैसे कुछ इधर उधर mugs वगैरह खरीद के eBay पे बेच दिए थोड़े बहुत. Mostly बकचोदी करी और सोचा क्या करूँगा. Just spend my time waiting. Finally मैं अपने, you know, उसके लिए apply करा. F1 visa के बाद एक चीज़ होती है OPT. इसके अंदर तुम एक साल के लिए काम कर सकते हो, right? If you're a non-STEM student, if you're a STEM student like Harthi, you can work for 2 years and then apply for extension. Fucking like unfair, but it's just the way it is. And since मेरा कुछ scene बन नहीं रहा था, my parents could see it. My parents were like, यार तू घर ही आ जा, क्या करेगा? Like legit, straight up. खर्चा कम हो जाएगा. क्योंकि you cannot legally work unless you have that approval. Of course. So you're just paying rent, eating food. In my case, you know, fucking getting high and chilling. Right. So it just like I knew कि मेरे को I have to go back. I have to pay my debt, whatever that is, right? Fair. तो मैं घर गया. And after that it was just denial. Like a solid 2-3-4 months. ये जब मैं आया था कॉलेज से वापस अगस्त के अंदर पिछले साल, सॉलिड डिनायल 2-3-4 महीने अभी देखेंगे, फिगर आउट करेंगे, ऐसा वैसा. बॉम्बे जा रहा हूँ. So during college, your plan was to stay back in the States. At least you wanted to stay back that in was the the plan. States. But फिर मैंने एक दिन बस बॉम्बे गया, फाउंड अ पॉडकास्टिंग कंपनी, अप्लाइड देयर. Yeah. 3 दिन उनके पास गया लगा था. They said no. Finally they said yes. Worked there for a month. Realized, bro, this is not for me. Just fucking slaving over shit. Right. No innovation, no scope. Then I tried to do something privately in Mumbai. Didn't have the discipline. Couldn't stick through it. Just ended up staying indoors most of the time. थोड़ा बहुत घूमता था. Wow, आज का win ये हो गया कि मैंने आज 2 बार खाना खा लिया. That like really that low. Went that Right. low. एक बार ऐसा हुआ कि जर्नलिस्ट फ्रेंड रीच्ड आउट कि तू पॉडकास्ट वगैरह बनाता है. आई वाज स्टिल मेकिंग पॉडकास्ट इन मुंबई. वो मैं कर रहा था फिर भी टू कीप माई सेल्फ लाइक मेरा एक वर्क डे ये कर रहा हूँ मैं. ही सेड यू नो आई एम ट्राइंग टू पिच टू Amazon, लेट्स मेक अ पॉडकास्ट. मैंने उसके लिए पूरा पॉडकास्ट प्रिपेयर करा, डिज़ाइन करा ऑन टेररिज्म, लाइक अ टेररिज्म फिक्शन पॉडकास्ट. दे फकिंग लव्ड इट बट they shelved the project because of the lockdown, so it never happened. Oh. हाँ तो Maybe they get back to it. I don't think so, not now, because he got a book deal instead. हाँ so all of that happened, and I guess at that point, once the lockdown hit, I was like, I have to stop lying to myself. Yeah. Or like I was trying to talk to this chick, and she's like, हाँ ये privilege ही होता है, you know, like 6-7 महीने घर के बाद आगे कुछ ना करना और figure out करना. I thought I was like, you know, like Iron Skull, but that hit me. जवाब वो. And I was like, मैं कितना denial में रह रहा हूँ यार, मतलब you know scene के खौफ में क्या कर रहा हूँ. So then after that in the lockdown I started making money. Like I started like taking contract, छोटे मोटे ज़्यादा नहीं, किसी का Instagram marketing का ले लिया, किसी के website का ले लिया, किसी का कुछ ले लिया, किसी के लिए कुछ licensing कर लिया. ऐसे like okay at least I have that, at least I can make money. ये चीज़ short हो गई, ये fucking like ये मेरे को इस चीज़ की टेंशन नहीं है, पैसे तो मैं ऐसे कमा लूँगा, ठीक है. Then what do I want to do, right? And what sort of sacrifice am I willing to make? Can I make this my day? And then more stuff happened. You know, like bro, कितना troubling, कितना मुश्किल टाइम था मार्च अप्रैल में. मैं और ये परेशानी में घूमते रहते थे. Then I think when June hit, and really like July was really started. July के अंदर, I saw him also started making some money around adventure and stuff. I started seeing things work out for me as well. And now we're here. Yes. Now we're here working on a writing product right now. तो ये scene है भाई. पर fucking like just lying to myself, like the entire last day is like just a bunch of lies to myself. I mean that's part of the story, right? It is because that's how you realize, bro. Yes, it's that not like okay, I कि was कॉलेज से fucking up जाते ही एकदम prodigal son वापस आ गया फाड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. Yeah, I returned on a low note to India, not like yeah. भाई वो नहीं होता भाई, वो बस उस वो मूवी में बस था, planning में में होता है. कभी खुशी कभी गम में था, जब वो शाहरुख खान बक के आ रहा होता है बैग पकड़ के. हाँ. और उसकी माँ को पहले पता लग जाता है. बट नहीं, ऑल्सो ब्रो रियलाइजिंग कि यू आर मॉर्टल. मतलब ये बड़ी वियर्ड सी चीज़ है जो मेरे को रियलाइज हुआ.
कि यू नो लाइक you're always like अभी ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, नॉट तो जो बात बोल रहा था ना पॉडकास्टिंग कैसे, I was like I have one thing going for me, you know, experimentation बाद में, but like seriously this is what I'm gonna do and then see what happens. I gave myself a month, मैंने अपने आप को टेस्ट करा क्या होता है, चल मैं देखता हूँ. मेरे को यू नो प्रखर ने मोटिवेट करा, इसने मोटिवेट करा, नमन ने मोटिवेट करा कि भाई तू इतनी सारी बातें करता है, कुछ डालना ही शुरू कर दे. एंड आई बीन प्रोड्यूसिंग कंटेंट फॉर लाइक लास्ट 2-3 years बट वेरी स्पोरेडिकली. कभी कुछ तेरे को तो पता ही, तुम तो अपना सारा स्टैंड अप उस पर लिखा था मेरे कंटेंट के ऊपर, राइट? यू नो कि बाथरूम में गए तो गुस्ल खाने में गुस्ताखी पॉडकास्ट निकाल दिया. भाई वेट कर रहा हूँ मैं अभी भी उसकी. निकाल तो दिया मादरचोद. गुस्ल खाने की गुफ्तगू. गुस्ल खाने में वैसे गुफ्तगू होना चाहिए पर गुफ्तगू बोला था इसने. हाँ भाई मैंने चेक किया था गूगल पे क्या बोलते हैं भाई, फिर भी गलत बोल दिया. कोई सी नहीं है. तो भाई ये सारा सीन हुआ एंड आई थिंक उसके बाद आई डिसाइडेड कि फक इट बना, बहुत हो गया. यू हैव टू रियलाइज कि यू नो यू कांट जस्ट ट्राई एवरीथिंग एंड बी लाइक ओह मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ ऐसे. एंड देन आई वाज लाइक ओके ठीक है, ये शातिर को तब मॉनिकर है, इस पे बकवास तो मैंने करी रखी शिट पोस्टिंग. लेट मी एक्चुअली से कि मेरे को कुछ तो आता है राइटिंग में, मतलब यार अपने दोस्तों से 10% ज़्यादा आता है. ट्राई करते हैं. वो फट गया. It just blasted on YouTube. I was surprised with the response, and I'm like, fine, you don't have to be the best, but like whatever you know, you can communicate that. The internet rewards you for that, for being yourself. And it's been just that. And I'm in the content business now, and then you know, I have like kabhi na kabhi kuch na kuch writing assignment milta rehta hai. Plus I'm doing real estate with my father, which is another hard truth that I have to digest. Puri zindagi नहीं मैं नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा. I don't still do it all the time, but I sit in observational capacity. No. Because मेरे को ऐसा भी लगता है अब कि there is a lot of money to be made in the unorganized sector. All your ed tech, fintech bullshit is one side, वो अलग है. Of course. But just cold hard cash, that's on the other side. हाँ भाई, definitely. And bro, and you have been like an example of that as well in this lockdown. I've seen you make money. I've seen you hustle for money in ways that I would never imagined. Fair. हाँ भाई, खून पसीना कमाना पड़ता है. Yeah. जिंदगी में मौज मारने के लिए. Recently sitting with dad and they both were like कि पहले दोनों कैसे होते थे, पैसा नहीं कमाना ऐसे वैसे, and now they looks like they've changed their perceptions. I think everyone has. People have, I don't know about others. खर्चे बढ़ गए हैं जिंदगी में भाई. खर्चे बढ़ गए हैं. उसके beyond bro, मैंने वो मॉडल वाली बात बोली थी ना. आदमी को टाइम रियलाइज होता है you have to step down and do something. हमारे मम्मी पापा की जनरेशन थी, ऑप्शंस कम है, अपॉर्चुनिटी कम है, एफर्ट जितना तुम डालते हो उसके पैसे उतने मिलते नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ घिसानी है, परिवार को आगे लेके जाना है, बच्चों को पढ़ाना है. दैट्स इट. हमारे टाइम पे ये सीन नहीं है. मुझे तो बल्कि लगता है कि भाई जिंदगी में क्या करना है भाई, इतना काम करके, मतलब दिन के 8 घंटे 10 घंटे काम अगर तुम कर रहे हो तो भाई तुम क्या कर रहे हो फिर जिंदगी के साथ अपनी. मेरे को ये लगता है भाई. मतलब आई थिंक यू डू नीड टू इनिशियली पुट दैट इन टू डेफिनेटली द रिवॉर्ड्स. डेफिनेटली मतलब सिस्टम्स बनाने की बात है, प्रोसेसेस. पर मेरे को ऐसा लगता है कि पुरानी जनरेशन स्टेबिलिटी को वो करती है, हम लोग एक्सपीरियंसेस को करते हैं. हमारी जनरेशन डेलीगेशन की है देखा तो, और हम लोग एक्सपीरियंसेस को वो देते हैं वेटेज. ठीक है, जैसे आई रॉक क्लाइंब फॉर द फर्स्ट टाइम, आई जंप्ड आउट. मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एकदम एडवेंचर एक्सपीरियंसेस, बट लाइक but in general just being in different places, trying doing out new things is more in now than एंड यार वही तो, वो सब चीजें करने के लिए यू नीड टाइम, यू नीड मनी. yes and वो मनी की सिक्योरिटी काफी साल तक अपने पेरेंट्स से आई थी हमें, राइट? फॉर दे हैड टू अर्न दैट, तो उनको स्टेबिलिटी ज्यादा प्रेफर्ड थी. इट्स मोर लाइक अ जनरेशनल building. You know what the comments are going to say? Oh my god, you fucking like privileged ass kids, because like it's a very serious thing. Fuck off. Like whenever you are honest about where you come from, people are just like, oh my god, like oh तुम्हें तो पता ही नहीं है, like yeah fucking a, like this is how life works out, fucking a, you know, like मेरे को ये बात बहुत बकवास लगती है. नहीं bro, whenever you're honest about the fact कि this is how I've struggled, this is like okay तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, sure, like नहीं bro, that's absolute BS यार. Yeah, like everyone has had their fair share of struggles regardless of the backgrounds, and if anything that privilege is also like if you don't make it then it's double hits you bro, harder. It hits you way harder in that. मैं ये बोलता हूँ it's sort of like better advantages to come from dirt. Yeah because you're that much growth is still like, you know, proportionately you've been a lot better. I think of the level of insecurity Akash Ambani and Siddharth Mallya must live with. Exactly. They have to find some sort of zen peace, तभी you know राजा का बेटा बुद्धा बनता है. legit whatever, but they have to create their own meaning for that, right? They can't compete in their dad's game now probably. I think about Abhishek Bachchan, like just not gonna happen, bro. Just not gonna happen. You just have to get content. और उस time पे ना your meaning and satisfaction for life becomes internal. It cannot be public facing. It cannot be something you derive from the public opinion कि ये लोग ऐसे कहते हैं.